Now, while studying the apoptosis, we have seen that apoptosis is regulated by different processes, by different proteins. There are different regulators. Now, in this segment, we will discuss that what are the factors which inhibit the apoptosis. सेल डेथ कौन से फैक्टर है जो कि सेल डेथ को इनहिबिट करते हैं, जो रोकते हैं. And the extracellular survivor factor which inhibit apoptosis in various ways. Remember, there should be different inhibition or inhibitor for the cell apoptosis so that the cell is not always destroying themselves. ये को खुद का बम्बार ना बन जाए. So extracellular signals, they are part of normal social controls that ensure the individual cells behave for the good of organism as a whole. जिस तरह हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, इसी तरह सेल्स जो हैं, they must have a good social control. They live in a cluster, in a society, or in combination together, and they have to behave for the good of organism. सेल जो हैं उनको ऑर्गेनिज्म में बिहेव करना पड़ेगा एज ए होल, and by surviving when they are needed and killing themselves when they are not needed, so that a balance is maintained. Now, some extracellular signal molecules which stimulate, जो कि apoptosis को stimulate करते हैं, whereas there are other signals extracellular which inhibit the apoptosis, जो कि apoptosis जो है उसको रोकते हैं. वो क्या क्या हैं? So the cell protein हमने पढ़ा such as Fos ligand that activates the death receptor, जो कि death receptor को activate करते हैं and thereby trigger the extrinsic pathway of the apoptosis have been discussed earlier. We have discussed that earlier, that what is the role of the Fos ligand on the death receptor. But the death receptor extracellular signal molecules that inhibit the apoptosis, extracellular signal जो कि apoptosis को रोकते हैं, and they are called survival factor. वो सेल का सर्वाइवल फैक्टर है, सेल को वो सर्वाइव करने में मदद देता है. तो ये क्या हुआ कि that is surrounding the cell which help to serve most animal cell require. क्या होने चाहिए? Continuous signaling from other cell to avoid apoptosis, because the cell, they occur together in a social contact, in the contact, so the most animal cell require continuous signaling. दूसरे सेल से continuous मुतवातर सिग्नल उन्हें आना चाहिए so that they avoid the apoptosis. Now this arrangement helps ensure that cells survive only when and where they are needed. चुनाचे वो वहीं जहाँ उनकी ज़रूरत है वहीं रहेंगे और there will be a control. A good example is a nerve cell. Now the nerve cell that receive enough survival signal live while the other die. Nerve cell, they are very novel type of cell, and what will happen that those cells which receive enough signals, those cells will survive, while the other cells which receive less signal, where they don't survive. So in this way, the number of surviving neuron is automatically adjusted. कि जो सर्वाइवल न्यूरॉन हैं, जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं सो दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द नंबर ऑफ टारगेट सेल दे आर कंसर्न विद सेल. कि जितने भी सेल के नंबर हैं वो उनको चाहिए, वो उतने अप्रोप्रिएट मुनासिब पे रहते हैं. जस्ट एज लुक एट दिस, देयर आर नर्व सेल्स, 6 nerve cells, target cells,
and cell death, it adjusts number of nerve cell to the size target. अब आप size देखें, first we had 6, but now we have 3 nerve cell. The role of survival factor and the cell death in adjusting the number of developing nerve cells so that the amount of target tissue, it remains the appropriate, मुनासिब रहे, मौजू रहे. तो ये एक एग्जाम्पल हो गई. नो सर्वाइवल फैक्टर क्या है? दे यूजुअली बाइंड टू द सेल सरफेस एक्सेप्टर. सेल सरफेस की जो रिसेप्टर हैं, दे बाइंड टू दैट एंड देन दे एक्टिवेट intracellular signaling pathway that suppress the apoptotic program. क्या करते हैं कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे जो है उसको वो सप्रेस कर देते हैं, उसको वो रोक देते हैं. एंड द एपोटोटिक प्रोग्राम ऑफन रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग मेंबर ऑफ द BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन. ये चूंकि कंट्रोल जो है वो कौन करता है? BCL2 फैमिली प्रोटीन. ये इवेंचुअली उसको कंट्रोल करके तो दे इनहिबिट द एपोटोसिस process.